Assalamu alaikum. I am just gonna wait for a little while. I'm gonna see how many people, maximum number of people who get to be live. And then we'll start the session. I hope I'm audible. मुझे मेरी आवाज़ सबको आ रही है? Walaikum assalam. I hope everyone is doing well during these tough times. I hope everyone's maintaining the social distance. अपने घरों में ठीक ठाक रहें, safe रहें, maintain social distance, and just to put a silver lining, what a remarkable time to study for CSS. Walaikum assalam Amara. Alright, so I start the session in about 2 to 3 minutes. I'm just waiting for the maximum number of people to come online. And आप लोग अपने questions जो हैं वो comments में type कर सकते हैं, and I'll make sure that as many questions as I can answer, I'll be able to answer them. और मेरी गुजारिश होगी सबसे कि प्लीज़ अमारा की फ़ीस ज़रूर अदा कीजिएगा. I hope most of the people know what it is. Alright, so we have more than 50, around 50 members who are live. I'll start the small conference. My name is Faiza Sattar, as you all know. I appeared in CSS 2018 और मेरी 35th position थी पूरे पाकिस्तान में. I got my first preference, which was Foreign Service of Pakistan. And my optional subjects were US history, international law, international relations, sociology, and gender studies. I have a background in English literature. I've done my master's in English literature from Punjab University, and I'm married. And what else? I'm a script writer, I'm a screenwriter as well. I write scripts, I write short stories. I have done some editing work which has been translated and published as well. So that's the little intro about me. अगर मुझे बताया गया था कि I have to start on current affairs. So आपके अगर कोई भी questions हैं किसी भी subject के हवाले से, I'll do my best to answer them. However, if you want to ask some specific questions regarding current affairs, please post them in the comments, because मैं साथ साथ comments भी पढ़ रही हूँ, and I'll do my best to answer it. Alright, so starting with current affairs. The best thing to do about current affairs is कि आप अपने newspaper reading की habit start करें from the very beginning. If you have to appear in 2021, sorry, I think this is the perfect time to get a head start. थोड़ा CSS के हवाले से information हासिल करना शुरू करें. थोड़ा सा उस लेवल पे, उस नॉलेज के जो पाथवे है उस पे आना शुरू करें, उस तरीके से सोचना शुरू करें, एंड सराउंड योर सेल्फ विद इंफॉर्मेशन दैट कैन इवेंचुअली हेल्प यू विद CSS. इसका जो एक बहुत छोटा एक पार्ट है, दैट इज़ द
the news, sorry, not a small chunk, it's a very major chunk. That's newspaper reading. न्यूज़पेपर रीडिंग का जब हम बात करते हैं तो मोस्टली पीपल गेट स्केर्ड बिकॉज लोगों को ऑब्वियसली कुछ आदत नहीं है न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, एंड मोस्टली पीपल थिंक दैट यू हैव टू रीड द इंटायर न्यूज़पेपर विच इज़ वेरी क्लंकी. एंड ऑब्वियसली जो शुरू में आप स्टार्ट करते हैं, सो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, राइट? So you, first of all, what you have to do is pick up any newspaper that you have and start reading the very first page, जो main headlines होती हैं. Go through those articles और बीच में से सिर्फ एक या दो opinion articles आप पढ़ लें. Yes, Samara, I'm telling them about the newspaper reading right now. So the first thing that I'm saying is start small. न्यूज़पेपर देख के घबरा नहीं जाना आपने. अभी अगर आप कल से अपनी न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो डोंट गेट स्केर्ड. ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट ऑफ वेरी स्मॉल. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टार्ट रीडिंग द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर and just read 1 or 2 opinion article and 1 editorial section. That is it. That is all you have to do. What this does is it helps inform your idea about what is going on in the contemporary world from a very academic point of view. अच्छा, आई डोंट नो वाई टीचर्स वोंट प्रेफर न्यूज़पेपर, बिकॉज मैंने अपनी प्रेसी की तैयारी भी न्यूज़पेपर से की थी. मैं आपको उसका मेथड भी बताऊंगी इफ़ समबडी वुड जस्ट रिमाइंड मी लेटर ऑन. Newspapers are the key. It is the first gate you get to cross for the preparation of CSS, because देखें जो books हैं, जो books available हैं उसमें limited information है which is mostly not up to date. So how do you keep yourself updated? It's by newspapers, journals and magazine articles. So coming to the newspaper, मैंने आपको एक दो बातें बता दी. You start off small and you will see कि आप eventually you're getting a hang of the current affair topics that are going on, the current issues that are going on. उसके बाद आपको एक महीने बाद ये लगेगा that you don't really need to go through each and every article of that set topic. You can just glance through that topic and move on. आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि 1 या 2 महीने में आपकी रीडिंग पेस भी बढ़ जाएगी and you will be able to skim through the news, most of the newspaper, which includes the opinion section, editorial section and the international page, and of course the first page. उसके बाद जब आपको ये 2 से 3 महीने गुजर जाएंगे काम करते हुए, देन यू कैन ऑल्सो मूव ऑन टू दोज अडेंडम्स जो स्पेशली डॉन न्यूज़ के साथ आते थे. दे वर 2 to 3 newspaper pages based on just one topic, and it had a wealth of information and data and statistics which was very very helpful for me personally, especially in answering questions related to CPEC or the water crisis or terrorism. So these were very important addendums जो newspaper के साथ आते हैं. But of course you have to start small, so don't get scared just by looking at the thickness of a newspaper. शुरू में सिर्फ पहले वाला पेज पढ़ें, 1-2 opinion articles पढ़ें, try to form your opinion. The thing that I used to do was I would cut newspaper के different articles and I would place them in different folders related to different topics. So I had different articles on CPEC, on the water issue, on Pakistan's mineral salts and mining and all the other agricultural issues. Then I have a separate folder for all the different topics that I had extracted from the syllabus. उससे ये होता था कि I had a wealth of information, lots of data and figures to back up my answer, जो हम बहुत आगे जाके जिस पे हम बात कर सकते हैं. अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आपने इनिशियली अपनी करंट अफेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्ड अप कैसे करना है. सो न्यूज़पेपर में आई डोंट हैव एनी, जमशेद, आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंस. इन द बिगिनिंग आई वुड गेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून एंड डॉन न्यूज़पेपर. उसके बाद मैंने दोनों अपनी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करवा के आई मूव्ड ऑन टू ऑनलाइन रीडिंग.
ऑनलाइन रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, उसमें ये होता है कि यू कैन सेव द आर्टिकल्स एज वेल, यू कैन सेव द लिंक्स. अगर आप अपने नोट्स अगर ऑनलाइन बना रहे हैं on a laptop or a Microsoft Word पे, it's very easy to copy paste those links as well to extract information when you need it. जहाँ तक मुझसे किसी ने आई थिंक मैगज़ीन्स का पूछा है. सो मैगज़ीन्स आर, I feel like magazines are a step higher than the newspapers in a way कि वो किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह बहुत प्रॉपरली कवर करते हैं. दे गिव द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ इट, दे गिव व्हाट्स द करंट सिनेरियो ऑफ फॉर इट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स करंटली, द सॉल्यूशंस, द रिकमेंडेशंस. तो जो मैगज़ीन आर्टिकल्स होते हैं दे आर मच मोर होलसम, बट यू कांट स्टार्ट विद अ मैगज़ीन आर्टिकल. आई थिंक for an amateur person who's at ground level, who's trying to build their information regarding current affairs, yeah, regarding CSS as a whole, they have to start small and they have to start with a newspaper. So any newspaper that's accessible to you? Yes, somebody has mentioned the Dawn Sunday iOS, which is very important. What I used to do is कि शुरू के दिनों में the two magazines would come to my house. I had a daily subscription for it. Eventually मैंने उसको Monday, Friday और Sunday की subscription करवा ली थी, because I had gotten a hang of a lot of topics and a lot of current issues that were going on. And yes, towards the end मैंने सारी subscription cancel करवा ली थी, and I just had online readings to do through their apps. What you have to do is कि आप current affairs का syllabus निकालें, then divide that syllabus according to topic themes, I would feel. So we have national, then we have regional, and then we have international. उन themes के अंदर पे मैंने certain set of topics रखे थे. जिस तरह water crisis जो है वो मैंने पाकिस्तान का भी रखा था, and then I had a regional section of water crisis as well. Same goes for CPEC. CPEC from the point of view of Pakistan, which would be the national, it's considered as a national topic, but from an international point of view, I would keep those CPEC articles alag se. So when you divide the syllabus and you know the topics that you have to go for, it makes things very easy for you. It makes, आपने अपना होमवर्क पहले करना है. होमवर्क में ये आता है कि गो थ्रू द सिलेबस, अंडरस्टैंड के कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को डिवाइड करें. बेशक वो आप फिज़िकली डिवाइड कर रहे हो फाइल्स और फोल्डर्स में, या आप सॉफ्ट कॉपी में उनको डिवाइड कर रहे हो. माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज़ एन एक्सेलेंट टूल. Microsoft Word is an excellent tool to divide and make notes and keep a track of notes as well. So whatever form you're using, make sure that you're dividing the topics up and you're collecting information in them. Initially, you're just collecting information. You're not memorizing them, you're not remembering them. Through your readings, अगर आपको लग रहा है कि किसी article में there is a certain fact or figure which appeals to you, you should definitely highlight it, and if you can, you should memorize it so that you're able to put it in an answer later on. हाउ मच टाइम शुड बी इन्वेस्ट फॉर आर्टिकल रीडिंग. तो जैसे मैंने कहा शुरू में, आप एटलीस्ट उसे 1.5 आवर दें ताकि आपकी आदत बने न्यूज़पेपर पढ़ने की. आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी देखेंगे कि आपकी रीडिंग पेस भी तेज़ हो रही है, एंड यू आर एबल टू कवर मोर ऑफ द न्यूज़पेपर और द मैगज़ीन आर्टिकल. तो शुरू में जब मेरी आदत नहीं थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो इवन इट वुड टेक मी अराउंड 1.5 आवर टू गो थ्रू दोज 2 to 3 आर्टिकल्स. लेकिन इवेंचुअली बाय नवंबर दिसंबर व्हेन आई वाज कम्प्लीटली डन विद ऑल ऑफ माई CSS स्टडीइंग, आई वाज एबल टू गो थ्रू द इंटायर न्यूज़पेपर इन वन सिटिंग. तकरीबन 1 घंटे में आप पूरा न्यूज़पेपर स्किम थ्रू कर लेते हैं. उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप में रिटेन रहती है. सो द थिंग इज़ दैट डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय करंट अफेयर्स, बिकॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट the subjects like current affairs, international relations and Pak affairs and even essay is कि इनके topics जो हैं वो interrelated होते हैं. So if you're doing a CPEC topic, it will definitely help you in essay as well. It will help you in Pakistan affairs. It will help you in current affairs. It can even help you in international relations or international law, maybe to some extent. So the best thing about
cutting those newspaper articles is कि आपके पास वो information store रहेगी for a very long time to come. I hope I'm still online. Yeah, I am. So मैं आपको सिद्रा ये नहीं बता सकती कि कितने टाइम के लिए आपको आर्टिकल पढ़ना चाहिए. It all depends, it's all subjective. But start building a base at least. And then you can move on to magazines, and then you can move on to journals as well online, which is quite complicated compared to newspapers. Yes, I agree S and Chishti that current affair के notes को बनाना और maintain करना, up to date रखना is very difficult, but believe you me, अगर आप ये initial जो preparation है इन्हीं महीनों में, इन्हीं दिनों में अगर आप कर लेते हैं तो it will make things so much more easier for you in the future, because everything आपकी सारी information organized होगी already. All you have to do is later on learn how to put that information on a piece of paper in that given time. तो मेंटेनेंस ऑफ नोट्स के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप फिजिकली नोट्स बना रहे हैं तो कीप डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स, लेबल देम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, सो दैट अगर वो टॉपिक बेशक पाक अफेयर के क्वेश्चन में आ रहा हो या वही क्वेश्चन जो है, वही जो टॉपिक की थीम है वो आपको करंट अफेयर्स में आ रही हो, दैट सिंगल फोल्डर विल बी एबल टू हेल्प यू अ लॉट. अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में तो आई वुड रिकमेंड माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, विच इज़ एन एक्सीलेंट टूल फॉर मी पर्सनली, और या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नोट्स. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू मेंटेन एनी नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. नोट्स डिटेल्ड में होने चाहिए या ओनली बुलेट पॉइंट्स, दैट डिपेंड्स. शुरू में मुझे नोट्स, अब मैं जो अपने नोट्स बनाती थी दे वर वेरी डिटेल्ड, बट they got very time consuming as well, because I was just building on my information. तो I had to write each and every data, fact and figure down. But आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी एक आदत सी बन जाती है, and you आपके in the back of the mind you keep storing all the information. So आपके जो नोट्स हैं वो भी फिर थोड़े से ब्रीफ होते रहते हैं. इट गेट्स ईजियर, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मेकिंग नोट्स इज़ दैट इट रियली हेल्प्स यू विद राइटिंग, विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ CSS. A lot of people just try to concentrate on getting the information done, but they forget कि जो लिखना है एंड में आपने 3 घंटे में, दे हैव टू डू, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 4 क्वेश्चंस, यू बेरली हैव 35 मिनट्स. उसके लिए आपको बहुत महीनों की प्रिपरेशन चाहिए होती है, स्पेशली अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है, इफ़ इट्स नॉट लेजिबल, एंड सेकेंडली इफ़ यू आर अ स्लो राइटर. सो मेकिंग नोट्स रियली हेल्प्स यू, एंड नोट्स जितना जल्दी आप बनाना स्टार्ट करेंगे, the more it will help you in the long run. Please do not shy away from making notes, from writing. इतना लिखें कि आपका हाथ थक जाए, that you get cramps in your hands. That was my strategy as well. Okay, so to build an analysis in current affairs, that only comes with the wealth of information you have. आपने किसी टॉपिक की इतनी डेप्थ में नहीं जाना जितनी वो रिक्वायर्ड नहीं है. आपने टॉपिक्स की ब्रेड्थ को भी देखना है. सो फॉर एग्जांपल मैं CPEC का टॉपिक लूँगी तो आई विल नॉट जस्ट बी रिसर्चिंग ऑन इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान में CPEC की अभी तक क्या कारकर्दगी है. ब्रेड्थ ऑफ अ टॉपिक मीन्स के हाउ इज़ द US व्यूइंग CPEC, हाउ इज़ इंडिया व्यूइंग CPEC, हाउ इज़ अभी तक चाइना की तरफ से क्या प्रोग्रेस आ रही है, दुनिया हमारी किस तरह देख रही है. उसको आप एक जियो स्ट्रेटेजिक लेंस से देखेंगे, उसको एक इकोनॉमिक लेंस से देखेंगे, सोशल लेंस से देखेंगे. सो देर इज़ डेप्थ ऑफ टॉपिक एंड देन देर इज़ अ ब्रेड्थ ऑफ टॉपिक. So for written, I believe that you need to know the
breadth of topic which helps you much more in answering questions and developing your own analysis. Analysis में मैं सिर्फ एक दो बातें ज़रूर करूँगी which goes for all questions. Never say anything that is anti-state. Throughout your readings, you will come across a lot of newspaper articles in very well-known newspapers that have a very sort of anti-Pakistan agenda. And I'm pretty sure कि जितना आप ज़्यादा पढ़ते रहेंगे newspaper articles, you will be able to identify what those anti-state elements are. So please do not, no matter what your personal opinion is on a particular subject, never say anything that's anti-state, and try not to involve politics or religion in your analysis. Analysis develop करने के लिए you need to have done a lot of reading. अगर आप start में ही अपना analysis develop करेंगे, most probably it would be wrong, because as amateurs we do not have that wealth of information. And you also have to understand कि your analysis at this stage will be inspired from others. You cannot, अभी हम उस stage पे उस intellectual capacity नहीं उतनी build हुई होती कि you can develop completely your own analysis, which you can't even support with arguments. If you have a background in IR or political science, and you know for sure that you can support your analysis with data, with facts and figures, then definitely go for it. Otherwise, I would say please do not risk it. अच्छा, ये जो controversial issues हैं, that all depends on how the question is framed. सिद्रा सिद्दीकी, आपने ये question किया है. I doubt कि ideology of Pakistan का अगर question आएगा तो it would be stated in a very controversial way. I doubt it. It all depends how you interpret the question, and you have to interpret the question in a very correct, right way. Whatever your stance is, if you're able to support it, you should be able to give very strong arguments. Okay, एस.एन. चिश्ती ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि does examiner want us to give analysis or opinion? Your personal opinion doesn't count. You are appearing in CSS exam to pass it and to become the representative of the government, of the state. So your answer should reflect the stance of the state. जो stance of the state होता है वो mostly analysis ही होता है, उसको हम opinion का word use नहीं करेंगे उसके लिए, because opinion एक personal opinion होता है. I could have personal differing opinions on different issues, but my personal opinion doesn't matter over here. So yes, the examiner wants you to analyze the situation, to break it down, to give supporting arguments for it or against it, support it with facts, figures, all the data that you have, any new information that you have, and build on it. Yes, Kesser, it's a very excellent exercise. There are lots of magazines available online, the Foreign Diplomat, the Diplomat, Foreign Policy, Foreign Affairs, Economist. These magazines are excellent, and I think to make your answer different from what the other 11,000 students or 12,000 students are writing, magazines are the way to go. Because not everyone out there is reading those magazines. So magazines give a very unique approach or analysis to your answer. But yes, at the same time, Kesser, please be mindful of the fact that there are a lot of articles within the magazine, there are a lot of information within a magazine which is not pertinent, and you cannot write it in a CSS exam basically. So you have to
make sure that you know the difference between what you can write and what you can't write. एवा जैज़मीन, इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इज़ इट ओके इफ़ आई मेक नोट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली. I don't have any good book for international law and I'm making notes with the help of internet only. Alright, so I usually divide my study sources in different groups. जो physical book आपको किसी भी book store से मिलती है, it is really good in conveying basic theories or basic concepts या definitions of any topic or of any word or of any phrase or any theme that you are doing in any subject. So for me, going through that book just to get those meanings or just to get those definitions जो आपने शायद word by word लिखनी है, international relations की काफ़ी ऐसी terms हैं या काफ़ी ऐसी quotations हैं जो आपको books में मिल जाती हैं, so they are sort of ready-made things. इसकी वजह से होता ये है कि you don't have to spend a lot of time searching कि जोसेफ नाई ने फ़लाने टॉपिक के ऊपर या फ़लाने करंट अफेयर्स इशू के ऊपर क्या कहा था. So you get that thing in a book. So books are very good material, supplementary material for basic concepts and basic theories. However, that's just one source and that should be the basic source. उसके ऊपर आपने इंटरनेट से जितनी आप हेल्प ले सकते हैं, whatever it is, be it research articles, be it journals. I remember going to JSTOR and finding a lot about Kashmir and what's been going on in the background, about SARC, जो आपको ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको इन बुक्स में नहीं मिलती. सो प्लीज़ कंटिन्यू कंसल्टिंग द इंटरनेट, बट इफ़ इट्स बिकमिंग अ लिटिल टू टाइम कंज्यूमिंग देन थोड़ी बहुत आप बुक्स की हेल्प भी ले सकते हैं. Mumtaz, I understand that making notes is very time consuming, but believe me, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अगर आप अभी से ही नोट मेकिंग की आदत बना लेंगे, by December you will be able to finish a 3-hour paper in that allocated 3-hour time. It's very difficult to understand या comprehend कि उन 3 घंटों में रोज़ के रोज़ आपने 2 पेपर देने हैं and it goes on for like 6 to 7 days. It becomes really tiring. So until and unless आपकी लिखने की आदत, you're not just writing properly in good English, but you're writing legibly as well, and you're using all the proper presentation skills. I think it's a really good thing, and I tell this to most of my students कि notes बनाना शुरू करें. जितना आप लिखेंगे उतनी आप कल को you'll be able to quickly formulate कि आपने अपने आंसर में कहाँ पे कौन सी चीज़ डालनी है, नेक्स्ट पैराग्राफ आपने कब स्टार्ट करना है, कौन सी कोटेशन किन पैराग्राफ्स के बीच में आएगी, किन सेंटेंसेस के बीच में आएगी. So I think writing notes is really helpful in the long run, but if you think that you are already a good writer and you need just a few months to maybe hone in your writing skills, I guess it's fine. I wouldn't recommend it, but हार्ड कॉपी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. No, Jamshed, sorry, one book is not enough for current affairs. It's a good complementary book, but it's not enough. You have to go for multiple books, multiple sources. जिसका मैंने आपको पहले बता दिया है. Yes, Essen, you can write a separate heading of critical analysis before conclusion. I don't know ये इस live time में हम कर सकते हैं कि नहीं, but there is a complete, I'm pretty sure you guys already know that there's a complete process of how to present your answer, which comes way ahead. I think by June, July आप आपने आंसर एंड में लिखना किस तरह है, आई थिंक वो जुलाई में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए.
and there are different ways to write an answer to make it more presentable, to make sure that it pops out of the paper, make sure that it catches the attention of the examiner, and writing as many headings, subheadings, bullet points. This is very, very, very important. I'm sorry, मुझे political science का नहीं पता, but as far as international relations is concerned, Muhammad Ahmad Liaquat. For me, international relations was a very interesting subject because एक तो it was related to the group that I really wanted to go into, which was Foreign Services of Pakistan. And the thing international relations did was it opened up the wealth of information present to me, because the subject has a very complementary nature. By that I mean that iske jo topics hain, they are also found in current affairs, they're also found in Pak affairs, and ऐसे में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड आई बिलीव CSS की जो फाउंडेशन, एक किस्म की आप कह लें फाउंडेशनल स्ट्रक्चर जो था फॉर द इंटायर CSS एंड in the future as well, interview, psychological preparation, and then the CTP, etc. It's based on IR more or less. So for me personally, I've heard that IR is a very high scoring subject as well. आपको obviously up to date information लेनी पड़ेगी इसके ऊपर, but I've heard that IR is more doable than political science. However, if you have a background of political science and if you're comfortable with the syllabus of political science, then go for it. Writing quotations in answer and recommend references. I guess the best references you can find are in books that are readily available in bookstores. अगर आप lectures attend कर रहे हैं या I don't know, I usually used to find quotations when reading articles, when reading magazine articles, especially Washington Post की, New York Times की, Wall Street Journal की. So even if economist is talking about CPEC, they will definitely include a quote from Hillary Clinton or from any important person in the world. So that used to be a good reference for me, and I would write it down along with that topic. Yes, you're very right, Shiraz. Books are written for publishers. इसीलिए I wouldn't recommend books कि सिर्फ आप किताबें ख़रीद के, वही जो डोगर पब्लिशर्स की हैं वही ख़रीद के आप उन्हीं के ऊपर अपना पूरा CSS की प्रिपरेशन बेस करें. एब्सोल्युटली नॉट. बुक्स जो हैं वो सिर्फ शायद आपको थोड़ी बहुत इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, बट यू हैव टू कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन इट. So there are a lot of websites that can help you in this regard, which is called Council of Foreign Relations की website है. पाकिस्तान की जो अपनी इंस्टीट्यूट्स हैं, IPRI है, I think IPRI, then we have Institute of Strategic Studies है. So there are different websites. I can look for them, I can post them on the group. I can make a list of them. They have excellent up-to-date information, but of course don't get overwhelmed. ये ना हो कि अभी आप इस live session के बाद you guys go to those websites and start downloading those journals. Please don't do that. That will just overwhelm you, and probably it will be a little scary. So start building your knowledge through small units first. So go for the newspapers first, then you go to the मैगज़ीन्स, उसके बाद फिर आप जर्नल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन जो पढ़े हुए हैं. Yeah, you can only improve writing skills through writing. There is no other way. आप अपनी writing keep on writing. अगर आपके पास एक्सेस है टीचर्स की, CSP टीचर्स की, उनको
अपने नोट्स चेक करवाएं, उनको अपने आंसर्स चेक करवाएं. They can point out information which is wrong, या they can point out where you've gone wrong grammatically. And the thing I recommend to everyone is, जब भी आप कोई चीज़ चेक करवाएं, हुआ वो कोई ऐसे हो या वो कोई आंसर हो, जब उसमें से गलतियाँ निकलें उसको आपने रीडू ज़रूर करना है. दैट्स द ओनली वे यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. जस्ट बिकॉज आपने CPEC पे 35 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिखा, आपने वो चेक करवाया, आपको आई थिंक 20 मार्क्स में से ज़्यादा अगर वो 9 मार्क्स मिले, टीचर की तरफ से आपको फीडबैक भी आ गया, प्लीज़ डोंट पुश दैट क्वेश्चन अवे. रीडू इट. Integrate all the information that you have received, integrate the feedback that you have received, do that answer again. When you're doing that answer again, when you're making those corrections, आपके mind में, आपके subconscious में, you're starting to build a formula, a format on how to answer questions very rapidly. So that is very important. Please do not forego the feedback that you are receiving. All right, Saeed Mohammed Bilal has asked a very pertinent question regarding online past papers. Believe you me, I think मैंने अपनी 65% of preparation जो CSS की थी वो past paper से की थी. मैंने आपको बता दिया कि हर syllabus, go through all the syllabus of all subjects, divide the topics. My next step was कि मैं पिछले 10 साल के past papers मैंने जमा किए और मैंने उनको फिर ब्रेक डाउन किया टॉपिक वाइज. सो मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जिसमें एक फ़ोल्डर है CPEC का, एक है वाटर क्राइसिस का, एक है नेशनल यूनिटी का. मैंने पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे आई स्किम थ्रू ऑल दोज 10 साल के पेपर, और जो क्वेश्चन उस टॉपिक पे आता था आई वुड एक्सट्रैक्ट इट एंड पुट इट असाइड, so that when I'm about to research on that topic, I would do that particular past paper question. Of course पहला क्वेश्चन करने में टाइम लगता था. इट वुड टेक मी इवन 1.5 hour टू डू वन क्वेश्चन, बट आहिस्ता आहिस्ता एवरी डे यू हैव टू डू एटलीस्ट 2 to 3 questions. वो कर के तो देन यू कैन स्क्वीज द टाइम इनटू 30 or 35 minutes. But it's very important to do past paper questions because it gives you an idea on how to solve the question itself. देखिए CSS में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है. That's not what they're looking for. What you do with that information and how you present it on that piece of paper in a very extremely constrained time, that's the art of CSS. So you can only learn that by practicing a lot, handwriting wise, and doing past papers. All right, Khizr is asking me for my favorite restaurant in Lahore. That has to be Namak, I think. Okay, so Sabah Khan ने पूछा है about the as a beginner. Sabah, I was a lot like you. I had absolutely no background in international relations or political science. मैंने जब इनके syllabus खोल के देखे थे तो it was quite intimidating. I was really scared. I think I opted for international relations because उसके जो topics थे, I was able to converge them with topics of other subjects, and they seemed more doable to me. I don't know. Political science में I believe that there was a lot of theory and philosophy involved, if I'm not wrong. So I opted out of it. And I was glad I made that decision because it helped me with a lot of other subjects and it helped me build my foundational knowledge in regards to CSS. Yes, Esther, you can definitely write book reviews. You can write a quote from famous authors related to that topic. I don't think you have enough time to write a book review. However, आप बुक का रेफरेंस दे सकते हैं कि इस बुक में ऑथर ने इस चीज़ के बारे में ये कहा था. But make sure that it's correct because of course the examiners are very well read persons, so please don't make sure that there's no mistake in that.
how to divide time during preparation. That is very subjective, Palvashe. I don't know. A lot of my colleagues had a very easy to do routine. They would study at their own pace. मैंने अपनी CSS की तैयारी स्टार्ट की थी around mid-July, and I made sure that I was done with everything by mid-November, early November. और उसके बाद I was doing past papers and memorization and just keeping myself up to date with the information. मेरा जो preparation का style है, it's probably quite difficult and very different from what might others suggest to you. Personally speaking, I would wake up around 8 in the morning. I would dedicate 1.5 hour to newspaper reading. I would start studying on my own, maybe doing a past paper question or an essay topic, या pressy का कुछ कर रही थी. Then I would go to the academy. I would attend 3-hour lecture. 3 से लेके 6 बजे तक का lecture होता था वो. I would attend that. I would come back. जो लेक्चर करा किया होता था उसी का मैं पास्ट पेपर आंसर खुद से करती थी, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द लेक्चर, दैट द नोट्स दैट आई हैड रिटन, बिकॉज वाइल आई वाज गेटिंग दैट लेक्चर आई वुड मेक इट अ पॉइंट टू मेमोराइज दोज थिंग्स एज वेल. तो वो एक किस्म की मेरी एक जो इनिशियल तैयारी होती थी वो हो जाती थी. एंड देन आई वुड कम बैक एंड आई वुड डू अ पास्ट पेपर एंड कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स, different subjects till at least 1 या रात के 2 या 1 या 2 या 3 बजे तक. And then of course wake up the next day early, 7:30, 8 and start the routine again. So it's very hectic. शुरू में I made a clunky sort of schedule for myself, जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं 2 weeks में इंटरनेशनल रिलेशंस ख़त्म कर दूँगी और 3 दिन में सोशियोलॉजी ख़त्म कर लूँगी और 3 दिन में जेंडर स्टडीज़. बट थ्रू दैट प्रोसेस आई फाउंड आउट दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो फिर मैंने उसको दिनों में डिवाइड कर दिया था. तो आई वुड जस्ट डू इट टॉपिक वाइज. सो इंटरनेशनल रिलेशंस वाज स्प्रेड आउट फॉर द नेक्स्ट 4 months, बट so were all the other topics, and मेरा जो मूड बनता था मैं उसके हिसाब से पढ़ती थी. तो I can't tell you how to divide your time, but I can tell you that personally speaking मेरी social life बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी. I was studying all the time, and alhamdulillah I have a very supporting spouse which made things very easy for me. If you're unmarried and all your parents want you to do is do CSS, that's the luckiest thing to do, believe me. And you can dedicate all your time and energy to the preparation of the exam. But it all depends person to person. I know some of my colleagues who started very much later on. They started by August, September. A few even started by October. I don't know what their routines were, but it's a very subjective thing. मैंने आपको अपनी routine बता दी थी. Aisha Lareb, yes, initially please make lengthy notes ताकि you're able to concentrate maximum number of data, information, facts and figures and all of that in those notes. आहिस्ता जब आपकी background information build हो जाती है, then you can start making brief notes as well. Okay, so the Pressy paper, Jamal Shah ने पूछा है, what about the Pressy paper? The technique I used to do for Pressy paper was न्यूज़पेपर के आर्टिकल की जो मैं कटिंग लेती थी उस आर्टिकल को मैं उस आर्टिकल की मैं प्रेसी बनाती थी. वो उससे होता ये था कि it would not only help me store the information, excuse me, it would not only help me with storing the information, but it would help me in regards to कि प्रेसी का जो स्टाइल होता है, फॉर्मेट होता है, टाइमिंग होती है, उसमें भी हेल्प करती थी. और प्रेसी पेपर में ऑल यू कैन डू इज़ डू पास्ट पेपर्स. पिछले 20 साल के पास्ट पेपर्स रोज़ के रोज़ एक पास्ट पेपर या आधा पास्ट पेपर करना शुरू कर दें एंड यू विल बी डन विद द प्रेसी पेपर. दैट्स माई पर्सनल एडवाइस.
Hizar is asking a very pertinent question about how my CST went. It's still going on apparently. Yes, Sayyid Muhammad Bilal, you're very right. Please, पास पेपर से ही आपको पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उस क्वेश्चन की वर्डिंग क्या होगी, हाउ विल यू ब्रेक द क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है. आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग इन करंट अफेयर्स. आई थिंक इट वाज द वाटर क्राइसिस विच उसका थीम ऐसा लग रहा था कि वो वाटर क्राइसिस पे है, बट वो मांग पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन रहा था. And how I think Pakistan or India can resolve that issue, something like that. So you have past paper जब आप करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है. It comes to you very naturally, obviously in the course of time, कि असल जो gist है, जिसे हम कहते हैं मुद्दा क्या है क्वेश्चन का, तो आपको वो समझ आ जाता है. Is there a role of optional subjects in group allocation? ग्रुप एलोकेशन काफ़ी देर की बात है, बट आई थिंक देर इज़ मे बी 0.5% वेटेज. आई रियली डाउट कि IR या आई लॉ रखने से आप सिर्फ FSP में ही जाएंगे, या पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखने से आप DMG में ही जाएंगे. इट्स एक्सट्रीमली अनलाइकली. इसकी बहुत कम वेटेज होती है. दिस शुडंट बी योर कंसर्न एट ऑल एट दिस स्टेज एट लीस्ट. Time management. Time management comes with a lot of practice. Always give yourself 2 to 3 minutes of leverage time. For example, अगर हम break down करें एक 3 घंटे के पेपर का, तो if I'm not wrong, we used to have, and Amara can correct me on this, if we used to have half an hour to solve the MCQ paper, and then we had 2.5 hours to solve 4 questions subjective, which comes down to 35 minutes per question जिसमें आपने करना होता था. But I would give myself 30 minutes to do it, ताकि जो आखिरी 5 मिनट हैं वो 5 मिनट कलेक्ट होकर आखिरी मेरे पास तकरीबन 15 मिनट्स बच जाते थे, which I could spend more on maybe क्वेश्चन के अंदर जो मैंने कोई लाइन छोड़ी हुई है, कोई कोटेशन लिखनी है, कोई एनी अदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड टू द लास्ट क्वेश्चन. बिकॉज माई स्ट्रैटेजी यूज टू बी, इट्स नॉट वेल फाउंडेड, बट माई स्ट्रैटेजी यूज टू बी कि मैंने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा करना है, बीच वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा करना है, और आखिरी वाला क्वेश्चन आई विल हैव टू डू इट रिमार्केबली. सो आई वुड एलोकेट मोर टाइम टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. और जो बीच के 2 क्वेश्चन होते थे, if I'm recalling it correctly, I would give them around 30 or 27 minutes. So time allocation is very subjective as well, but ये सिर्फ और सिर्फ practice से आती है. Muhammad Hasham, I used to write a lot of essays. I would write at least 2 essays per week for CSS. Yeah, I would write 2 essays per week. और मैं करती ये थी कि I would get them photocopied and I would give it to some of my सीनियर फ्रेंड्स हु हैड ऑलरेडी अपेयर्ड इन द CSS एग्ज़ाम. मैं एक कॉपी उनको दे देती थी उसी एग्ज़ाम का, उसी ऐसे का. कुछ जो थे वो मैं एकेडमी के डिफरेंट टीचर्स को दे देती थी, और जो उनसे मुझसे फीडबैक आता था, वट एवर दे वुड से, दे हैड डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट माई एसेज. कुछ मुझे फेल कर देते थे, कुछ मुझे अच्छे नंबर से पास कर देते थे. तो वट एवर फीडबैक आई वॉज गेटिंग फ्रॉम देम, आई वॉज जस्ट एब्जॉर्बिंग देम एंड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई एम एम्यूलेटिंग देम इन माई CSS एग्जाम, इन द essays आगे. Okay, so another of my favorite topic to speak on is जो मोहम्मद अहमद लियाकत ने अभी पूछा है. Ma'am, what about mock exams? I think mock exams are the second or third most crucial element of CSS exams.
अगर आप अकेडमी जा रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड, एक्सेलेंट. But if you don't have enough time or whatever constraints or restraints that you have, you're unable to go to the academy. आप खुद से तैयारी करें, but just enroll in the academy to appear in their mock exams. And a lot of academies now, CSS preparation academies, are offering this opportunity to students. I think they take just a little bit of fee to check your papers and give you feedback. Mock exams helped me personally so much so कि मेरे जितने mock exams में मार्क्स आते थे, 1 or 2 मार्क ऑन एंड ऑफ उससे मेरे रियल एग्ज़ाम में आए थे. सो दैट्स हाउ एक्यूरेट माई द पीपल हु वर मार्किंग मी, दे वाज दैट मच एक्यूरेट कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस होगा. सो मॉक एग्ज़ाम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दे रियली हेल्प यू विद नर्व्स, क्योंकि मॉक एग्ज़ाम भी आप 3 घंटे में दे रहे होते हैं इन अ कंस्ट्रेंट टाइम लिमिट. आपके पास प्रॉपर, आई डोंट वांट टू स्केयर यू गाइज, बट प्रॉपर टेबल नहीं है. आप यू डोंट नो वेयर टू पुट योर वाटर बॉटल और वेयर टू पुट योर पेंसिल बॉक्स. यू हैव टू कीप चेंजिंग different markers and different colors and all of that. So mock exam is a very excellent way to get those initial nerves off so that you get prepared for the real deal. मैंने कोई 2 से मैंने 3 दफ़ा मॉक एग्ज़ाम्स दिए थे अपनी एकेडमी में, which really helped me because I remember I think I appeared in a January mock exam as well. So till the end they really helped me with the nerves. Preparation for time is very subjective. I started in mid-July, I guess, and I was done by the entire CSS studying by beginning of November. But if you feel कि अगर आप कुछ चीज़ों में थोड़ा सा you're lacking in some things, please start early. And I think कि जो quarantine का time है, use it as a blessing. This is a perfect time to study. To start building upon those initial things जो मैंने आपको बताए हैं, so that you don't have to completely go into it पूरी तरह से जुलाई में, which does get a little overwhelming. So you start off small by now, and by July इंशाल्लाह आपको इतनी आपकी background information होगी that you are able to maybe even pick up one past paper question and do it. But the thing with preparation is of course consistency. Do a little, but do it every day. Don't skip. Alright, Aisha, so yeah, it's a very pertinent concern. अगर आप पेपर स्टार्ट करते हैं, but there is no other way around it. I cannot imagine anyone appearing in CSS exams without having done past paper questions. मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पूरे पास्ट पेपर क्वेश्चंस करें हर सब्जेक्ट के उठा के. अगर आप एक टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल CPEC का टॉपिक है, अगर आप उस पर अपने पूरे प्रिपरेशन में एटलीस्ट 10 to 11 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 10 क्वेश्चंस बाय द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, that's not a lot of questions that you are doing, honestly. इसीलिए मैं I'm suggesting everyone to start early, ताकि by June, July, by August you start building up on those questions. या द प्रेपरेशन ऑफ प्रेसी थ्रू न्यूज़पेपर, आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली ही बताया है कि जो न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप उनको करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स की फ़ाइल में रख रहे होते हैं, तो उन्हीं आर्टिकल्स को प्रॉपरली पढ़ के उनकी आप प्रेसी बना लें. जो उनका एक रूल होता है कि यू हैव टू मेक अ प्रेसी विच इज़ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल, एंड यू डोंट हैव टू यूज़ द सेम फ्रेजेस और द सेम वर्ड्स, and make sure that you remain in that given word count. So that used to help me a lot. And the best part was कुछ लोगों ने यहाँ पे vocabulary का भी पूछा है. तो
there were certain words, phrases और idioms जो articles में use हुए होते थे वो जिनका मुझे नहीं पता था, तो I would highlight them, I would use them, I would make a separate note file for them. मैं वो वर्ड्स लिखती थी, उनका मीनिंग निकालती थी और उनका सेंटेंस खुद से बनाती थी. तो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी एज वेल. सो द क्रक्स ऑफ आई थिंक दिस सेशन हैज़ बिन कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने से you're not just gaining information, you are also practicing for your pressy, you're practicing for your essay, you are coming at different subjects from just reading one newspaper article. Muhammad Hasham, no, I did not rely on academy notes at all. I used to make my own notes. मैं 3 घंटे की क्लास academy में लेती थी, but that would form just maybe 20% of my answer. Most of the research I would do is when I would come back home and I would research more on that topic. जो मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जहाँ पे कोई gap था या any new information that I had found out during the course of my readings. पहले मैं उन सबको I would collect them and then I would do that past paper question. So academy notes are not enough. आप ये भी देखें कि academy में आपके साथ there are 700-800 people going and they are receiving that same lecture. So it's better to make your answer a little more different to help make it stand out. You have to do your own research, you have to write your own quotes, you have to make an analysis that you don't think that a lot of people are doing. So please don't just rely on academy notes. Try to build up on them. Rote learning, there is a bit of rote learning in CSS, I would say, yes. Islamic studies के पेपर में अहादीस, Quranic verses, उनकी rote learning करना. Of course, some basic data, figures and facts, पाकिस्तान का external debt कितना है, GDP of different countries, some historical dates, कुछ I remember there was a quotation by Leon Panetta जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में भी यूज़ की थी, करंट अफेयर्स के पेपर में भी, पाक अफेयर के पेपर में भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने वो ऐसे में भी यूज़ की होगी. सो या यू कैन रोट लर्न दीज थिंग्स, बट इतनी रोट लर्निंग नहीं है जितनी यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल फॉर अ नॉर्मल एग्ज़ाम. Suhail, please don't just refer to one thing for current affairs or for any other subject. The more varied, the more multitudinous of your resources, the better grasp you have on a topic and the better answer you're able to formulate. सिर्फ आप एक बुक या एक मैगज़ीन को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि if this is enough. No, I'm sorry, it will not be enough. You have to research on it. आप up to date articles निकालें. Believe me, all the people who are asking for my notes, एक तो I have no idea where my notes are, and they will be completely outdated right now because there is so much information, such new issues, current issues are happening in the world. The world has changed so much from 2018 that you have to keep yourself updated. So just one magazine will not be enough. Yeah, I first covered the entire syllabus, और जो rote memory है वो मैंने बहुत end में की थी. That wasn't more important for me. The more important aspect of writing an answer was the analysis aspect of it. No, Manzoor Ali, you cannot solve past paper questions without syllabus, without consulting syllabus. There are certain steps to CSS that you have to follow. It requires a lot of homework. Unfortunately, Pakistan की education में हमें आदत है for very quick fixes. डोगर की हमने guide book ले ली, whatever that may be.
CSS जो है it's a very difficult exam for a reason. So you have to put in a lot of effort and do a lot of homework before you start on the CSS syllabus. मेरे homework में यही था कि सारे subjects के syllabus को thoroughly पढ़ना, उसको break down करना, make sure अगर कोई topics जो है वो converge कर रहे हैं उनको मैं side पे कर दूँ, how to approach a question of water crisis from a current affairs perspective, from an international relations perspective and from a park affairs perspective. So इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है. You have to do your homework, which obviously also consists of going through all the past papers, compiling the past papers, then dividing those past paper questions according to the topics or themes or however you're comfortable with, and then going for the preparation. Again, Zohaib, I am trying to say, जितना आप अपने हाथ से पेन से लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. बुक पे अगेन आप कितने कोई नोट्स बना लेंगे. देयर विल बी वेरी मिनिमम ऑफ नोट्स दैट यू विल बी एबल टू राइट. छोटी स्पेस है, यू आर नॉट एबल टू राइट इट लेजिबली. आपकी ना उससे आपकी सिर्फ एक एफर्ट, यू जस्ट एक्सर्टिंग एफर्ट दैट विल नॉट रियली हेल्प यू. विद नोट्स यू आर राइटिंग, यू शुड राइट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने कल को आंसर किस तरह लिखना है CSS के एग्ज़ाम में when you will be sitting for the exam. So that's what I'm trying to say कि जब तक आपके हाथ में पेन नहीं होगा और आप उससे लिख नहीं रहे होंगे, it's very impossible, it's close to impossible to say कि आपने properly CSS की preparation की है. यस हशाम, आप ऐसा करें कि कोई आपने जो टॉपिक बनाया है, जिस टॉपिक के नोट्स आपने लिए हैं एकेडमी से, उस टॉपिक का एक पास्ट पेपर क्वेश्चन, चूज़ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड ट्राई टू सी इफ़ यू आर एबल टू आंसर इट कम्प्लीटली उन्हीं नोट्स में से जो आपने एकेडमी के नोट्स बनाए हैं. इफ़ यू थिंक कि आपका आंसर इतना अच्छा बन गया है उन एकेडमी के नोट्स से ही, विच आई रियली डाउट, गो फॉर इट. आप उसको चेक करवाएं. इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग या आपको 20 मार्क का आंसर नहीं बन रहा, एंड अगर आप चेक करवाते हैं और नेगेटिव फीडबैक आता है, विच मीन्स दैट द एकेडमी नोट्स आर नॉट इनफ, सो प्लीज़ कंसल्ट अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज. आयशा, क्रैमिंग कहीं नहीं करनी पड़ती. द मोस्ट लेवरेज आई गेव टू माई सेल्फ वॉज, वही मैंने आपको जो भी बताया, रोट मेमरी, रोट लर्निंग ऑफ सर्टन पैसेजेस या कोटेशंस और एनीथिंग. क्रैमिंग आई डोंट थिंक आप कर सकते हैं, बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल एनालिसिस बेस्ड, इट्स ऑल डिटेल्स, इट्स ऑल हाउ थ्रू विच लेंस यू आर लुकिंग एट एन आंसर, व्हाट द एग्जामिनर इज़ ट्राइंग टू आस्क ऑफ यू. तो ये आई डाउट कि ये क्रैमिंग से चीज़ें आप सीख सकते हैं. अगर जो लोग इंग्लिश में वीक हैं, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग बुक्स, एनी बुक, एनी फिक्शन बुक. उसका टाइम नहीं है तो प्लीज़ जस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. द अमाउंट ऑफ help that you receive from a single newspaper is boundless. It not only helps you with improving your English, your vocabulary, but it also guides you कि आपने एक आंसर को एकेडमिकली, प्रोफेशनली किस तरह क्राफ्ट करना है, किस तरह उसको कैसे स्ट्रक्चर देना है आपने. So the newspaper reading I think is more than enough for people who think they have a weak English. Give it some time. ऐसा नहीं होगा कि आप 1-2 दिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और अगले दिन आपकी इंग्लिश अच्छी होगी. नो, इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स, इट टेक्स months of reading and writing, but start on it. I will not discourage anyone, but this is a high time to start, and this is the best time to start right now. जनरल एबिलिटी के पेपर के लिए आई कंसल्टेड बुक्स.
एक कोई मियाँ शफीक एम शफीक, आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट बुक, बट उनकी एक बुक थी जनरल एबिलिटीज़ की. दैट वाज फाइन. But what I would do for my general ability paper is draw diagrams with every answer and make sure that my answer was excuse me. I would make sure कि मेरा आंसर जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट सब हेडिंग्स में बुलेट्स पॉइंट्स हैं, और हर आंसर के साथ मैं डायग्राम ज़रूर बना लेती थी. आई थिंक डायग्राम इज़ kind of a way to get good grades in the general ability paper. बाकी जो क्वेश्चन पास्ट पेपर से अगर आप निकालें तो काफ़ी क्वेश्चन के आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक है. तो द बेस्ट वे टू डू इज़ गो ऑनलाइन, सर्च फॉर द मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर, बिकॉज दे नॉट लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन और लॉट ऑफ डिटेल. अगर कोई बायोलॉजी एनाटमी का कोई क्वेश्चन है, आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एयर कनाल एंड द एयर सिस्टम, तो उसका एक बेसिक सा डायग्राम बना लें, उसको लेबल कर लें, उसके डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनैलिटीज़ जस्ट मेमोराइज देम, दैट्स मोर देन इनफ. यस सनाउला, जो ऐसे की लिमिट होती है आप उससे प्लस या -10 वर्ड्स कर सकते हैं. सो इफ़ द ऐसे लिमिट वर्ड लिमिट इज़ 2000, आई थिंक 1980 तक अगर आप लिख लेते हैं तो दैट्स गुड इनफ. +-10 वर्ड्स, दैट्स व्हाट द OA लेवल पैटर्न वाज. तो मैंने भी उसको CSS में भी मैंने उस पैटर्न को फॉलो किया था. यस हशाम, जो ऐसे का आपका कंटेंट होता है वो आपको प्रिपरेशन के दौरान मिलता है. एंड द मोर एसेज यू राइट, सो जिस तरह मैंने आपको न्यूज़पेपर्स का बताया वही आपने जो अप्रोच है वो आपने एसेज में भी करनी है. पिक अप एनी रैंडम टॉपिक फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, उस पर आप ऐसे लिखेंगे, बट यू विल स्टार्ट विद राइटिंग जस्ट 1 पेज. तो 1 पेज के अंदर आप स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंटेंट एंड कंक्लूजन, दैट्स इट. द नेक्स्ट डे व्हेन यू पिक अप एन ऐसे टॉपिक, आप उस पर 1.5 पेज लिखेंगे. दिस यूज टू बी माई स्ट्रैटेजी टू किक स्टार्ट माई सेल्फ ऑन ऐसे राइटिंग, बिकॉज आप एक ही दम से 15 to 16 पेजेस नहीं लिख सकते, आपके पास वो वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती. So you start off small, you start writing small, 1.5 page, and every time you write another essay, you add maybe another page to it. और उसके हिसाब से आप अपने essay की formatting कर लें. So if you start writing an essay, say from tomorrow, you should expect कि आप 1 या 2-3 हफ्ते के बाद एटलीस्ट आप उस पर 3 पेज लिख रहे हों उस टॉपिक पे. एंड इसी तरह अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ये बरकरार रखें प्रैक्टिस, सो बाय आई थिंक August, September, or maybe October, November, you are able to write 10, 11, 12 pages. And by December, you're able to write plenty of pages for an essay. So please start small. And yes, essay का जो मटेरियल होता है वो आपकी प्रिपरेशन से, आपकी पूरे CSS की प्रिपरेशन से, पूरे सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन से ही आता है. Math part is very difficult. Unfortunately, I'm not very good with maths, so I made sure कि जो मेरा subjective part है general science and उसका I scored really good marks in that. However, I don't know if the maths part was that complicated, but maybe in my head it was very complicated. But कुछ ना कुछ अगर आप कर लें, कहीं से math की help ले लें, so you will be able to do it. Don't worry about the math part. Rana, my first preference was Foreign Services of Pakistan, and Alhamdulillah I was allocated in it. मेरे total marks हैं 712, I think. I've completely forgotten my total marks, but
I was able to secure 700 plus marks in my written. In my written exam, I was able to score 712 marks. All right. Any other questions? I hope I've been able to help you out. Unfortunately, I'm unable to answer questions related to the allocation of different provinces. मुझे इसका idea नहीं है. It's a very technical subject. It's a very technical thing to talk about. All you have to do at this point is not to worry about कि आप किस province से ताल्लुक़ रखते हैं, what your background is. All you have to do is get a head start on the CSS preparation. That should be your only headache. Strategy for composition, pressy paper, I've told you, past papers कर लें, pressy paper आपका हो जाएगा. All right, I hope I've been able to help everyone, and दुआओं में याद रखिएगा, and I hope Amara invites me to this session again. It was wonderful interacting with all of you. Please stay safe, maintain social distancing, maintain social isolation, and you utilize this time as much as you can for whatever goals you set in your mind, be it CSS की तैयारी या any other exam that you're giving, any job or career related goals you have. So make sure that you're utilizing this time properly, and thank you, Amara. I'll definitely love to come aboard again. And yes, I am Fuzzy Rants on Twitter. I've made an official account as well, Faiza FSP के नाम से, जिस पे I will now be answering more CSS related queries. I'll end this session. अगर आपकी कोई भी queries हैं, you can please try to reach me on Twitter. And yes, don't forget Amara's fee. I hope most of you know about that. I do not have an Instagram. I do have a Twitter account. I am active on it as much as I am able to. So I'm just gonna say goodbye to everyone. दुआओं में याद रखिएगा, and don't forget Amara's fee. Allah Hafiz. Bye bye.